अस्सलाम वालेकुम to everyone. I hope कि आप अच्छे से होंगे. And by blessing of Allah, I'm fine. Today I'm going to upload my second lecture in continuation of the first one, wherein I started to discuss the accounting assumptions. And in that lecture, I had already discussed the first one, going concern assumption. And now, today, I'd like to talk about the second assumption, that is consistency accounting assumption. So far this consistency accounting assumption is concerned, it explains itself what it means. Consistency. Let's forget this. First try to focus on this, what it states. Consistency. Consistency means that we had to be constant. Whatever we are doing, we had to be constant, and with regard the activity, with regard anything. So कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो एक बार काम करते हैं आप उसको कंटिन्यूअसली करते रहें. Normally, cricket, most of your cricket followers, you may be aware about the tricks of the trade, wherein sometimes commentators say that he is consistently performing. Consistently performing. Consistently performing, what does it state? It states that a player is scoring, he's performing, whether with the ball, whether with the bat, in all the games. It's not he will perform in one game and for 15-20 games, or after 5-6 games he'll perform again. Such players cannot be called consistent. So in accounting, there are different methods of recording. There are different ways of recording the things. So once you adopt any method, you had to be consistent with that method. You need not to change this method after a couple of years. For example, I'll just give an example, like depreciation is being provided on the fixed assets. So there are different methods of depreciation, like written down value method is there, constant method is there. In other words, we say fixed method. Once you adopt any method, you have to follow that method consistently. आप जो एक बार मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, जो आप मेथड एक बार अडॉप्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द डेप्रिसिएशन, तो भाई आपको कंटिन्यूअसली उस मेथड को फॉलो करना है. If you will not adopt that method continuously, if you will change the method every now and then, every year after year, what it will lead? इससे क्या होगा? इससे ये होना है that there will be no uniformity in the presentation of the data. अगर मानो इस साल आपने डेप्रिसिएशन का एक मेथड अडॉप्ट किया है, तो वैल्यू ऑफ assets will be as per this method. In next year, if you adopt some other method, the value of the depreciation will come different. So
You cannot compare the method of depreciation of this year with that year. Or if you adopt different way of recording the transactions, it it will lead non-uniformity. यूनिफॉर्मिटी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यूनिफॉर्मिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होगा? यू कैन मेक कंपैरिजन of data of this year with the previous years, or data of this year with other coming years. अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी अप्रोच अडॉप्ट नहीं करते हो रिकॉर्डिंग में भाई, you cannot compare the things with the previous years, because वो रिकॉर्डिंग डिफरेंट मेथड से हुई है और आज की रिकॉर्डिंग आप डिफरेंट मेथड से कर रहे हो. So you need to be consistent in following the methods. Once any method has been adopted, you have to follow that again and again. But does it mean that once any method adopted cannot be changed? No, the answer of this question is no. You can change the method. You can change it, provided there are sufficient reasons to back your answer. There must be sufficient reason to back your answer that you have to change the method. For example, in case it is required by law, it is required by law that you have to change some method, you have to adopt a new method. Or, in other words, we can say, if it is required by any accounting standard, new standard has been pronounced and new standard has been formulated, and now it is demanding that you have to change the method, that time you have to change it. You cannot deny. Or if at your own level, I mean to say that you're feeling at your level that changing this method to another method, or adopting this new method will make my financial data more presentable, and it will make the balance sheet or any financial statement good as compared to the previous one. That time, in such cases, you can change the method. But your approach should not be that once adopted anyone, you will change that again and again, or alternatively you will change the methods. अब इससे क्या होता है? Now, if method has been changed, let's take an example. अगर आपने मेथड चेंज किया, मानो डेप्रिसिएशन की बात हम कर रहे हैं, पहले फिक्स्ड के हिसाब से आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते थे, फिक्स्ड मेथड के हिसाब से. नाउ यू हैव अडॉप्टेड रिटन डाउन मेथड. What you have to do now? You have to give the retrospective effect to this method. अब ये retrospective effect क्या होता है? आपको ये डेप्रिसिएशन, जब से आपने मशीन को डेप्रिसिएशन करना स्टार्ट किया और पहले आप फिक्स्ड मेथड यूज करते थे, नाउ अब बेटा आपने चेंज किया हुआ मेथड, अब नाउ यू हैव अडॉप्टेड न्यू मेथड, बट नाउ यू हैव टू calculate your depreciation on the machinery. Since the inception you have started to provide depreciation as per this method, now you have to provide depreciation as per this method, and you have to implement the change. This is stated by the accounting standard. So it's what it is implication.
on which I'm making more focus, its implication is that once consistently method has been adopted, it brings uniformity. Once there is uniformity, you can make comparison. Comparison becomes very easy. And some good decisions are backed on that comparison. For example, there are two students. They appeared for the board examination. One has appeared for JK post, and another has appeared in some other board. Say that in some other board of any state. CBSE. Now you have been asked to make comparison between these two students. You can make. I'm not saying that you cannot make. But still, the level of examination, the level of syllabus, so based on these, the comparison will be quite difficult. But if the students of same board, that appeared from the same board, like JK Bose or CBSE, both students have appeared for this or this. Now you have been asked to compare their performance. You can easily comprehend. You can easily make the comparison between the students. The reason is that syllabus same, examination pattern same, evaluation board same, examination conducting authority same. So once there is uniformity, you can compare the things. So if there's one board and another board, two boards, you don't know the level. You may be aware about the one board. You may not be aware about that examination pattern or evaluation pattern. So these things make comparison a bit difficult. And sometimes even no meaningful comparison being drawn. But once uniformity is there, seriously, you can make comparison. It will be meaningful and you can even bank some decision on that comparison. So another assumption is that accrual. I think this is most important assumption to understand, because companies need to follow this. What accrual means? Accrual assumption states that revenue to be recognized when it's earned and expenses to be incurred when becomes payable. If you understand this statement, it means this assumption is you can understand this assumption properly. Revenue to be recognized. It states that revenue to be recognized when it is earned. Up there you have to understand earn or received. ये assumption कहता है भाई आप अपना रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करें, आप अपना रेवेन्यू तब उसको माने भाई जब आप उसको अर्न कर रहे हो,
ना कि जब आप उसको रिसीव कर रहे हो। ऑल earned revenues, another statement I'm making, all earned revenues are incomes as per the accrual system, but all received incomes are not incomes under accrual system. For example, you are manufacturing certain products or you are manufacturing certain services. Here you have received order in advance from any party, means A, B, C से आपने order लिया है. ऑर्डर में ए आपको कहता है भाई मुझे 30 यूनिट्स चाहिए, मुझे फलानी डेट पे 30 यूनिट्स चाहिए, और साथ में आपको मानो 1 यूनिट बिक जाता है 100 रुपए में, 3,000 रुपए का वो हमें ऑर्डर दे रहा है. अब साथ में वो ऑर्डर के साथ ऑर्डर, एज यू नो, पहले जब आप किसी चीज को खरीदना होता है भाई आपको ऑर्डर प्लेस करना है. ऑर्डर और डिलीवरी में टाइम होता है, गैप होता है, इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इसमें और उसमें. जब ऑर्डर आपने प्लेस किया, ऑर्डर का ये मतलब है कि भाई आपने फलाना ऑर्गेनाइजेशन को बताया भाई मुझे इस डेट पे ये ऑर्डर चाहिए. अब ऑर्डर के साथ आपने मानो 1550% पेमेंट रखा, आपका टोटल पेमेंट 3000 बनता है, लेकिन 50% पेमेंट यू हैव अटैच्ड विथ योर ऑर्डर. आई एज अ बिजनेसमैन, shall I treat this 50% means 1500 as my earned income? Shall? The answer is no. I cannot treat this amount as my earned income, and this is to be treated as an advance payment, and it is liability on my business. It's liability on my business, and this amount will be treated as my income once I will transfer the ordered goods to the concerned party. ये पैसा मेरा इनकम तभी बनेगा जिस टाइम, जिस दिन, जिस डेट पे मैं अपनी इस पार्टी को चीजों की डिलीवरी करता हूं, चीजों को ट्रांसफर करता हूं. उस टाइम, उस डेट पे मैं इस वाले पैसे को खाली मैं 1500 रुपए को अपना इनकम नहीं मानूंगा, उस दिन मैं अपने इस वाले पैसे को अपनी इनकम मानूंगा. दिस 3000 विल बी माई इनकम, चाहे मैं उस दिन ये चीजें पैसा रिसीव करता हूं या नहीं करता हूं, बट दिस अमाउंट शैल कॉन्स्टिट्यूट माई इनकम एंड आई हैव टू बी प्लेस दिस इन माई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड एज माई इनकम. So here, this 1500 cannot be treated as an income unless and until I'm not executing my order on the day, and but till the time, this amount is to be treated as an advance payment, and it is liability till that time. So, इसका ये मतलब हो गया, तो 3000 रुपए जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हो, जब आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो, जब आप ऑर्डर को ट्रांसफर करते हो, जब आप चीजों को ट्रांसफर करते हो, भाई उस दिन आपकी इनकम ये 3000 रुपए बन जाएगी, और आप इसको अपने स्टेटमेंट्स में अपना इनकम दिखाओगे. चाहे आपने रिमेनिंग पार्ट उस समय पैसा ले रहे हो, वेदर यू आर रिसीविंग द डिफरेंस दिस 1500 रिमेनिंग 1500 और नॉट, आप ले रहे हो आपका इनकम वो तभी कहलाएगा, आप नहीं ले रहे हो आपका इनकम वो तभी कहलाएगा. ये 1500 रुपए accrued इनकम आपका उस समय बन जाएगा. दिस विल कॉन्स्टिट्यूट योर accrued इनकम.
दिस 1500, क्योंकि 1500 आपने ऑलरेडी कैश में लिया था ना एडवांस के टाइम पे, लेकिन अब जो इसमें टोटल 3000 बनता है 1500 जो आपको लेना है। अगर आप उस टाइम लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं लेते हो तब भी आपका यह इनकम कहलाएगा, एंड यू कैन प्लेस दैट इन योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। और सो फार द एक्सपेंसेस आर कंसर्न, expense to be incurred and becomes payable। अभी payable, इसको बेटा इसको समझने की कोशिश करना, payable क्या होता है। हम अपने expenses तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब वो पेबल बन जाएंगे, चाहे हमने उस टाइम पे किए या नहीं किए। मानो हम एक बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं, 31 दिसंबर आ गया, मीन्स दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर ईयर। बिल्डिंग में हमारा रेंट 50,000 रुपए था पर एनम। अब जो ये 31 दिसंबर चला गया, हमने इन 50,000 रुपयों में से खाली रेंट बिल्डिंग ओनर को 30,000 ही दिया। क्या हमारा साल का रेंट का 30,000 रुपए रिकॉर्ड हो जाएगा? नहीं, हमें पेमेंट करनी थी 50,000 रुपए की। वे सपोज टू मेक पेमेंट ऑफ 50,000, बट आउट ऑफ द 50,000 वी मेक द पेमेंट ऑफ 30,000। द रिमेनिंग 20,000 will be also recorded, will be also shown as an expense, because this amount is payable। ये अब हमें देना ही देना है। फ्यूचर में कब दे कब नहीं दे वो फ्यूचर की बात है, पेमेंट फ्यूचर में होनी है अब इस वाले पैसे की, बट भाई एक्सपेंस आपको ये इसी साल में ट्रीट करना है। और दैट इज वाई एक्सपेंस हमें तब इनकर करनी है, एक्सपेंस हमें तब रिकॉर्ड करनी है when they become payable, whether paid at the time when they become payable or not paid, that is immaterial, that is irrelevant। कैश का लेना, पेमेंट का करना, चाहे किया कि नहीं किया, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दे आर इमैटेरियल, इररिलेवेंट। आप पैसा लेते हो तो भाई ठीक है, नहीं लेते हो तो ठीक है, आप पेमेंट करते हो एक्सपेंस का तो ठीक है, नहीं करते हो तो तब भी ठीक है, बट अंडर एक्चुअल कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिकॉर्ड देम ऑन योर डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ योर बैलेंस शीट, सॉरी इन योर प्रॉफिट लॉस अकाउंट। So this is very important, understand this concept, accrual concept, आप इसको ऐसे याद रखें। And another thing which pertains to this concept, all activities with regard incomes and expenses of the current year, the activities must pertain to current year। ये जो एक्सपेंस और इनकम सब रिकॉर्ड कर रहे हो, ये उन एक्टिविटी का होना चाहिए जो करंट ईयर की एक्टिविटी हो, ये नहीं होना चाहिए इट मस्ट बी प्रीवियस ईयर्स, इट मस्ट बी ऑफ द फ्यूचर कमिंग ईयर्स। द एक्टिविटीज you are recording revenue and expenses, those activities must be of the current year। So दो चीजें इसमें याद रखें, एक्टिविटीज जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो करंट ईयर की होनी चाहिए, और एक्सपेंस आप एक्सपेंस आप इनकर कर रहे हो जो पेएबल हो जाती हैं, और इनकम्स आप रियलाइज करते हो जो आपकी अर्न हुई हो, जो आपने अर्न की हो, चाहे कैश लिया, चाहे पैसा लिया या नहीं लिया। सो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट टिप्स अबाउट द एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी assumptions। आई होप कि आप इससे कुछ अंडरस्टैंड करोगे। And one thing I'm telling you, this accrual is very important. Thank you very much.